Hello students, the question is assertion. An electron and a proton enters with the same momentum p in a magnetic field B such that p is perpendicular to B, then both describe a circular path of the same radius. And the given reason the radius of the circular path described by the charged particle, charge q and mass m, moving in the magnetic field B is given by r equals to mv upon qb. So the problem is based on the topic moving charge in a magnetic field. So now the assertion is given here that there are two particles. First one is electron and second one is proton. And it is given that they have the same momentum. They have the same momentum and they enter in a magnetic field in such a manner that P is perpendicular to B. Now we know that momentum, linear momentum P is equal to m into V, mv basically. So in other words, if we are saying that P is perpendicular to B, it means that V is perpendicular to B. Or in other words, we can say that the particle's velocity, the direction of the velocity is perpendicular to B. And we know that from the formula F equals to QV cross B, that if V and B are perpendicular, then the direction of force is perpendicular to both. And in this way, we can also say that the particle moves in a circular path. It follows a circular path, definitely. So the assertion is correct. Assertion statement is correct that when the velocity vector, or we can say that the momentum of both the particle, electron as well as proton, is perpendicular to B, then it moves in a circular path having a certain radius and the equal radius it is mentioned. So for the equal radius, the reason is there. The reason states that the radius of the circular part depends upon this equation, r equals to mv upon bq or qb. r equals to mv upon qb. Now we know that mv is nothing but the momentum, so we can say that r is equal to p upon qb, where p is the momentum. Now for both the particles, we know that for the proton as well as the electron, the charge is same, which is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. So in this way, we can say that q is same and b is also same for both the particles. So the denominator is same for both the type particles. Now it is mentioned that they are having the same momentum. So if they are having the same momentum, then the numerator is also same for both the particles. In other words, we can say that all the three quantities, such as the p, which is linear momentum, the q, that is the charge for both particle, and b, that is the magnetic field in which both the particles are entering. All these parameters are same for both the particles. And if all the parameters are same, then we can say that the radius is also same for both the particles. So in other words, we can say that the reason is the correct explanation of the assertion. तो ये assertion reasoning based problem है मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड कंसेप्ट से, टॉपिक से. यहाँ पे कहा गया है assertion में कि अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन है और दोनों का सेम मोमेंटम है और वो इस तरह से एंटर करते हैं कि P परपेंडिकुलर है B के, तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं जिसकी सेम रेडियस होगी. तो यहाँ पे हमें पता है कि मोमेंटम बराबर होता है mv और गिवन है मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू b, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है दोनों पार्टिकल की वो b के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. हमें ये भी बताया जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि अगर अदर देन दिस कंडीशन अगर पार्टिकल एंटर करता है, तो या तो अगर सेम डायरेक्शन में v और b होंगे तो उस केस में उन दोनों के बीच एंगल जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, तो वो सेम डायरेक्शन में ही चलेंगे. लेकिन अगर जीरो ना होके और 90 डिग्री ना होके हो तो वो स्पाइरल पाथ में चलते हैं. ये भी हमें कंसेप्ट पता है. बहरहाल दूसरा जो इसमें कहा है, रीजन इसका जो दिया है कि रेडियस सेम होगी, तो उसके लिए रेडियस की इक्वेशन दी गई है mv अपॉन qb. यहाँ पे mv बराबर होता है लीनियर मोमेंटम, और दोनों ही पार्टिकल के लिए चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है. मोमेंटम अगर सेम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं सर्टेनली कि रेडियस भी सेम होगी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का.
सो ये इसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रीज़न करेक्ट है एक्सप्लेनेशन असर्शन का, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट कहलाएगा, क्योंकि असर्शन रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम में ऑप्शन ए होता है कि रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. So in this way we can say that option A is the correct option, because option A corresponds to the situation in which both the assertion as well as the reason are correct, and the reason is the correct explanation of the assertion. So hope you understand the explanation. Thank you.